Good afternoon, ma'am. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Afternoon, ma'am. ma'am. So quickly, I will take down your attendance. Quickly, give your answer your roll calls. Roll number 1, Rohan Rana, Saksham Rana, Present, ma'am. Samanyu Kamra, Samanyu, Samanyu Kamra, संभव जैन Present, ma'am. कहाँ है? अच्छा, ओके. सावन सॉरी सात्विक वाजपेयी, Present, ma'am. सावन कपूर, Present, ma'am. शाश्वत पांडे, Present, ma'am. Excuse me, श्रेया ma'am. चैटर्जी, Present, ma'am. सौरभ कुमार, Present, ma'am. स्वप्निल राघव, स्वप्निल राघव. Excuse me, ma'am. मैम फर्स्ट रोल नंबर आ गया है. एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन करा हाँ, था. मैंने कर दिया था बेटा आपका, तभी आपका नाम था, तभी मैंने कर दिया था. मैम मैं स्किप हो गया. को क्या नाम है? मैम रोल नंबर 8 शशांक. मार्क्ड है प्रेजेंट बेटा आपका. रोहन राणा की भी. उत्सव कुमार सिंह, प्रेजेंट मैम. विनायक बेनी, Present, ma'am. विश्रुत जैन, मैम प्रेजेंट मैम. यश मैम मेरी दलाल, अटेंडेंस स्किप हो गई. Yes, ma'am. Present. यदुन आहूजा, प्रेजेंट मैम. अभिमन्यु, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, अमोल वर्मा, अमोल वर्मा, मैम. अनिकेत, सॉरी अंकित कुमार यादव. Yes, ma'am. हाँ, अंकित कुमार. Yes, ma'am. Present, ma'am. ओके. अनमोल शर्मा, आर्यन, प्रेजेंट मैम. मैम अंकित मेरा नाम. आर्यन चिकारा, प्रेजेंट मैम. दक्ष गौतम, दक्ष गौतम, दर्शन वर्मा, कुणाल बागेल. अमन, यू कैन म्यूट योर सेल्फ. कुणाल बागेल, मोहित राज, प्रेजेंट मैम. पारस कुमार, पुलकित कुमार, राजदीप गुप्ता, ऋषभ पांडे, प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. सचिन कुमार. कौन है? अभिमन्यु क्या हो? मैंने भी तुम्हारा नाम कहाँ लिया है? मैम ऋषभ पांडे का प्रेजेंट मैम बोला. सचिन कुमार, सम्यक जैन. मैम प्रेजेंट. So far the absent students are मैम just a minute beta. So far the absent students are Swapnil Raghav, Toish Sinha, Abhimanyu, Abhishek Kumar. मैम आपने मेरा नहीं बोला मैम. अमन 60 रोल नंबर. बेटा नहीं बोला, इसका मतलब मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया. मैम अभिमन्यु प्रेजेंट मैम. ठीक है. ओके मैम. थैंक यू. Abhishek Kumar is absent. Daksh Gautam is absent. Darshan Verma is absent. Kunal Bagel is absent. Paras Kumar is absent. Pulkit Kumar is absent. Rajdeep Gupta is absent. Sachin Kumar is absent. Sanchit Sharma, प्रेजेंट मैम. Shubham Chauhan, प्रेजेंट मैम. Surya Rana,
Present, ma'am. Shubham Singh, Present, ma'am. Suryansh Chopra, Ujjwal Singh, Present, ma'am. Vaibhav, Present, ma'am. Vishal Dahiya, Vishesh Singh, Present, ma'am. Yash Chandra, Present, ma'am. Akash Gaur, Present, ma'am. Aryaman Singh, Present, ma'am. Ayushi Aryam, Present, ma'am. Ayushi Singh, Present, ma'am. Ayushman Taran, Present, ma'am. Abdul Kavi, Aditi Garg, Present, ma'am. Aditya Dasgupta, Aditya Mohan, Present, ma'am. Aditya Nigam, Present, ma'am. Aditya Singh, Akshat Singh, Akshat Balodhi, Akshit Saini, Present, ma'am. Aman, Present, ma'am. Aman Present. Kaushik, Aman Kaushik, Present, ma'am. Aman Kumar, Aman Kumar, Aniket Jha, Anirudh Sharma, Present, ma'am. Ankit Makhija, Present, ma'am. Ankit Raj Bandhu, Present, ma'am. Ankush Kumar Sagar, Present, ma'am. Anmol Sharma, Present, ma'am. Ansh Arora, Present, ma'am. Ansh Heta, Yes, ma'am. Ansh Maheshwari, Present, ma'am. Anshuman Gugut, Present, ma'am. Anuj Kumar Jha, Yes, ma'am. Anuj Kumar Tanwar, Present, ma'am. Anurag Bhardwaj, Present, ma'am. okay. Kunal, I'm not marking your attendance. If you want, you can leave. I will not mark attendance after you enter. If you enter after 5 minutes after the class has started. If you want, you can leave. And if anyone leaves in between, which I'm observing, so I'll mark you absent side by side. So last class we started with, it's okay, Kunal, if you want, you can leave the class. I'm not marking you present. It's okay, Kunal. I understand the technical issues. You will take care of the technical issues from next time onwards. So we were doing the I'll share my screen. We can discuss all the issues later. First, we can have the class, right? Okay, ma'am. Yeah. Yes, ma'am.
So what we were doing last time, first of all, you can do a question. We had started absolute convergence series. Right. So discuss the convergence of just a minute. What happened? Oh, just a minute. Yeah. Discuss the convergence of -1 raised to power n summation -1 raised to power n -1 discuss the convergence of the following of this series. Tell me if it is convergent or not. What kind of series is it? Ma'am, alternating. Ma'am, alternating series. So which test will you apply? Leibniz test. Ma'am, You will Leibniz apply test. Leibniz test. So for what things will you check here? Ma'am, first we'll check Monotonically whether decreasing. Yes. Check if it is monotonically decreasing. How will you check if it is monotonically decreasing or not? ma'am un minus 1 minus un should be less than 0. Right. Un minus un plus 1 should be less than 0. Should be greater than 0. Yes, ma'am, greater than 0. Greater than 0. Un minus un plus 1 should be greater than 0. Because what you want is un should be greater than un plus 1. So how will you define the un? You are given with the un term. So un plus 1 is -1 raised to power n. N plus 1 multiply by. Sorry, when you are checking this thing, when you are checking this relationship, you only have to consider the numerical values. So the numerical value here are, so the numerical value will remain as n upon में 2n minus 1 minus n plus 1 upon में 2n plus 1. n plus 1 should be greater than 0. If it is true, then it is a monotonically decreasing sequence. Check this. Check this. Quickly do this. Ma'am, decreasing है. Decreasing. Okay. Now check if it is, what is the limit? What is the limit of un? Ma'am, it's coming out to be 1 by 2. Half. It is coming out to be 1 by 2. 1 by 2. So It is oscillating. it is oscillating, right? Okay. Now next that we were doing was we were doing the absolute convergence of a series. This is a new concept, and in this concept what we do is we check the absolute convergence of a series. If we have a alternating series,
if we have a alternating series and we take the absolute values of all the terms in the series, and after taking the absolute values, we find that the resultant series is convergent, then we say that it is absolutely convergent. Fine. So what we are saying here is, if we have a series like, if un is an, I gave you the definition last time, I gave you this definition yesterday. If a series is of arbitrary terms u1 plus u2 plus u3 plus u up to un plus infinity, such that the series u1 mod of u1 plus mod of u2 plus mod of u3 plus mod of un up to n is convergent, then the series sigma un is said to be absolutely convergent. Then the series sigma un is said to be absolutely convergent. For example, Excuse me, ma'am. yes, Ma'am, when we say that a series is convergent and absolutely convergent, is there any difference? yes, we'll see some examples. ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा what I am trying to say here. You'll just get to know. You'll understand what I mean by saying the absolutely. बेटा इसमें आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी suppose alternate series है, you have a series like this. u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on. ठीक है, and then you get a series. Suppose this series is, आपको ये कहा गया है ये चेक करने के लिए, find out whether this series is absolutely convergent or not. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, u1 plus mod of u2 plus mod of u3 हाँ जी, I'm sorry for the interruption. If you have a series like this plus mod of u4 plus, if you are able to get a series like this, then suppose you are asked to check the convergence, you are asked to check the absolute convergence of this series, then you have to take the absolute values of the terms in this series that you get like this, and then you check the convergence. For example, if you have a series like 1 minus 1 by 2 plus 1 by 4 minus 1 by 6 plus 1 by 8. Quickly tell me, is this series convergent or not? Quickly tell me, is this series convergent or not? Ma'am, it's convergent. It is convergent. Which test did you apply? Which test did you apply?
Leibniz. Leibniz test. Okay. Is this series absolutely convergent or not? No, ma'am. No, Why? ma'am. This series is not absolutely convergent, right? What about this series? What about this series? Is this series convergent? Is this alternating series convergent? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is this series Yes, ma'am. Yes, ma'am. why this series is absolutely convergent? Which test did you apply? Leibniz. I said, okay, you applied the Leibniz test to find out if this series is convergent. How did you define the series? You define the series to be UN क्या है इसमें? 1 by 2 raised to power n. 1 upon So n is 2 raised to the power n. right. So this will come out to be 0. Limit अगर आप इसकी लेंगे, limit लेंगे तो this will come out to be 0. So this series is convergent. And what about convergence? Is this series absolutely convergent? Yes, ma'am. Which test did you apply? Ma'am, it was a result in 1 upon n to the power of p. Right. So now if I have these two series, this series is not convergent, but this series is absolutely convergent. This series is convergent and this series is absolutely convergent also. So are you able to see the difference? तो मतलब अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक सीरीज कन्वर्ज होगा और दूसरी सीरीज कन्वर्ज नहीं होगा, तो दे कैन बी अ डिफरेंस. ठीक है. नाउ टेक दिस सीरीज. Now again, एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम वो जो पहली सीरीज है वो कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? 1 - 1/2 + 1/4 वाली. मैम अगर हम उसमें सेकंड मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के जिसमें 1 है. एक सेकेंड, आपने सही कहा, ये कन्वर्जेंट है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है. आपने सही कहा. दिस सीरीज, जो पहले वाली सीरीज है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. This series is convergent by your Leibniz test, but this series is not absolutely convergent. Is that fine? Yes, ma'am. So we say that it is conditionally convergent. So we say that this series is absolutely, this series is conditionally convergent. Is that okay? Yes, ma'am. ठीक है. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? जब आप इसके सारे टर्म्स का एब्सोल्यूट लोगे तो ये सीरीज क्या बन जाएगी? 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 एंड सो ऑन. तो अगर आप इसकी कन्वर्जेंस चेक करोगे तो दिस विल नॉट बी कन्वर्जेंट. ओके, इज दैट फाइन? Yes, ma'am. और हमें ये कैसे पता चला कि ये कन्वर्जेंट नहीं है? हमने कौन सा टेस्ट लगाया इसके लिए? हमने इसके लिए कौन सा टेस्ट लगाया? लेबनिट्स टेस्ट लगाया था. क्यों लेबनिट्स टेस्ट क्यों लगाओगे?
मैंने ये कहा है कि जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। बेटा आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो, एक सेकेंड रुक जाओ। आपके पास एक तो ये सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 सॉरी 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/10 प्लस सो ऑन। ठीक है, दूसरी सीरीज है आपके पास 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 माइनस 1/32 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर आपने क्या किया यहाँ पे, अब आपको ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है, और ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं है, राइट? नाउ यू टोल्ड मी दैट दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और नॉट, जल्दी से बताओ। नो मैम। This is not absolutely convergent. Which test did you apply? Ma'am, limit test. Yes. Limit test में कैसे अप्लाई करेंगे? Basically you applied the p value. आपने इसके अंदर सिर्फ p वैल्यू जो आपने p टेस्ट वाला जो अप्लाई किया था, जो आपने एक रिजल्ट ऑब्टेन किया था, वो कैसे यूज कर सकते हो आप यहाँ पे 1 माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास सीरीज क्या बन जाएगी 1। इफ यू आर टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक सेकेंड, या अगर आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 प्लस एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप हाफ कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/3 सॉरी प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन। अगर हम किसी सीरीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसकी कन्वर्जेंस पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, राइट? यस मैम। Yes, तो ma'am. अब हमें इस वाली सीरीज का रिजल्ट पता है कि क्या है, ये वाली सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट। ये तो डाइवर्जेंट है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ट, तो ये मतलब ये वाली सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट नहीं है। और ये वाली सीरीज हमें कैसे मिली थी, बाय टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दिस सीरीज। So this series is not absolute. So this series is not absolutely convergent. Is that fine? यस मैम। Yes, ma'am. And this Yes, ma'am. series is not. Sorry, this series is convergent by the Leibniz test. Right? What about this series? Is this series convergent or not? Yes, ma'am, it is. It is convergent by the Leibniz test. And this series is convergent or not? Sorry, it's absolute convergent or not? Yes ma'am, it is absolutely convergent It also. is. Yes. It is absolutely convergent also, right? Because और कौन सा टेस्ट आपने अप्लाई किया यहाँ पे, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्यों अप्लाई करेंगे इसमें? रेशियो टेस्ट में किससे चेक किया आपने? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में।
एब्सोल्यूट कन्वर्जन के लिए क्या है बेटा इसमें? किससे आपने चेक किया? क्या रेशियो टेस्ट? हाँ जी, हार्मोनिक सीरीज से। हार्मोनिक सीरीज से ही आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 by n raised to the power p वाले फॉर्मूला। हाँ, सॉरी वो तो नहीं लग सकता, रेशियो टेस्ट से आपने सही किया है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट, सो द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड दिस सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट एज वेल. So we have a very important result. Please all of you write down a very important result. Please write down a very important result. Yes, ma'am. The result is an absolutely convergent series. An absolutely convergent series is necessarily convergent. An absolutely convergent series is necessarily convergent, but not conversely. But not conversely. Why? Why do we have this thing? How can we check this thing? मैम बट How नॉट के can बाद we, how can we check this thing? That an absolutely convergent series is necessarily convergent but not conversely. Because what we did was, in the comparison test, what we did was, if I say like this, अगर आपकी ये कोई भी arbitrary series है जिसके अंदर कुछ terms आपकी positive भी हो सकती हैं और कुछ terms negative भी हो सकती हैं. So if I define this thing, so I can have this ऐसा होगा. ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? Yes, ma'am. तो यस मैम u1 is going to be less than equal to, I should write less than equal to, u1 is less than equal to mod of u1, u2 is less than equal to mod of u2, u3 is less than equal to mod of u4 and so on. तो अगर मेरी ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी? नो मैम Yes, ma'am. Yes, by the comparison test, I can say that if this series is convergent, then this series is going to be convergent. Comparison test में हमने ये डिस्कस किया था, तो हम ये कह रहे हैं कि जो absolutely convergent series है, अगर हमारी ये वाली सीरीज convergent है, तो ये necessarily convergent होगी ही होगी. ठीक है, अगर ये convergent है, तो ये convergent होगी ही होगी. लेकिन अगर ये convergent नहीं है, तो हम सॉरी अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी कन्वर्जेंट होगी. अभी आपने एग्जांपल देखा कि सपोज अगर मेरी ये सीरीज है विच आई डिफाइन इट टू बी लाइक, विच आई डिफाइन इट टू बी लाइक, अभी हमने एग्जांपल देखा 1 minus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 sorry minus 1 by 6 plus and so on. इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्जेंट थी? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्जेंट थी? नहीं थी, लेकिन ये कन्वर्जेंट है. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई एब्सोल्यूट सीरीज कन्वर्ज नहीं, सॉरी अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट भी कन्वर्जेंट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है. इज दैट फाइन? Yes, ma'am. I hope it is not confusing. So write down the series and check the absolute convergence. Check the absolute convergence of the series. I'm giving you a question. Check the absolute convergence of the series sin x divided by 1. Sorry.
I'm just taking the mod values plus sine 2x divided by 2 cube mod values sine 3x mod 3 cube. Check the convergence of, test the convergence of, sorry, एक second. Yes, yeah. Check the convergence of this series. Check the convergence of this series. Is this series convergent or not? Is this series convergent or not? जल्दी से बताइए. अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी साइन की वैल्यूज होती है, साइन की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं? व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन वैल्यूज? -1 to 1. -1 टू साइन की जो वैल्यूज होती हैं दैट इज बिटवीन -1 to 1. तो अब हमने यहाँ पे मॉड ले लिया तो इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी? 0 से 1. 0 to 1. 0 to 1. ठीक है, तो और नीचे क्या है? 1 2 cube 3 cube 4 cube 5 cubes. So the value here is less than 1. So we can compare it with 1 by n cube. This is going to be always sine nx mod value divided by n cube. n cube is always less than equal to 1 by n cube, right? Right? Now is your 1 by n cube convergent? Yes, ma'am. So is this series convergent? Yes, ma'am. Okay. Now let us define the alternate series corresponding to this series. Now define the alternate series corresponding to this series. वो क्या होगी हमारी? Sin x Now check the absolute, now check the conditional convergence of this series. मतलब अब ये हमको ये पता है कि अगर ये सीरीज गिवन है आपको तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये एब्सोल्यूट सीरीज आई है दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट? तो क्या नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट दिस सीरीज? Is it convergent or not? Yes, ma'am, it is convergent. So it is convergent. Because इसके corresponding जो absolute series है वो convergent है, इसीलिए हमारी ये series भी convergent है. Is that fine? Yes, ma'am. Examine the next, please write down next question. Examine the convergence and the absolute convergence of, examine the convergence and the absolute convergence of the series -1 raised to power n plus 1 into n divided by n square plus 1.
minus 1 raised to power n plus 1 into n divided by n square plus 1. Now, please tell me whether this series is convergent or not, whether this series is absolutely convergent or not. Ma'am, it is absolutely convergent. It is absolutely convergent. Yes, ma'am. And what about the other way? Matlab, is this series convergent? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it is. Which test did you apply? Ma'am, I applied Leibniz test. Right. When you apply the Leibniz test, what you get is the limit n tending to infinity 1 by n plus 1 by n, which is equal to 0. And is it in a monotonically decreasing order? Yes, ma'am. Yes, this series is in the monotonically decreasing order. So this series is convergent, and this series is also absolutely convergent. Absolutely convergent में हमारी UN क्या बन जाएगी? UN will be equal to n upon में n square plus 1. 1. So which test did you apply? Comparison test. Yes, you can apply any test for this kind of a series. You can yes, you can use any test, right? So write down one more question. Check the convergence and the absolute convergence. Check the convergence and absolute convergence of the series 1 by root 2 plus 1 by root 3 plus 1 minus 1 by root 4 plus and so on. चेक दी सी क्लास. अच्छा, एक चीज आप सुन लीजिए. अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपको ये कहा जाता है सिर्फ क्वेश्चन में डिस्कस द कन्वर्जेंस या टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज, यू हैव टू इन्फॉर्म अबाउट all the types of convergence applicable to this given series. ठीक है, जैसे मैंने अब आपको एक क्वेश्चन दिया and I just asked you to test the convergence of this series. Then you have to tell me about its convergence, normal convergence, absolute convergence, and the conditional convergence. You have to respond about all the kinds of convergence of a given series. Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hanji. This is not absolutely convergent. This is not absolutely convergence. Which test did you apply? Leibniz test. Absolute convergence के लिए Leibniz test की क्या जरूरत है? इसमें कंपैरिजन. अरे भूल गया मैम, वो पहले से रिजल्ट है हमारे पास में जिसमें 1 upon n की पावर p है. Yes. So in that case, for p less than equal to 1, it is divergent. Yes ma'am, इसमें p की वैल्यू half है. Right. Here p is half, which is less than 1, so it is divergent. Right. और इसकी alternating series की convergence? Is it convergent or not? Is this series Ma'am, it is convergent or not? Ma'am, it is convergent. It is It convergent. is convergent. Ma'am, so it is conditionally convergent. It is conditionally convergent, right? So all the terms are monotonically decreasing order में है. Yes ma'am. Are you sure? Yes ma'am. Yes, ma'am.
एक सेकेंड बेटा. Okay. So basically this chapter is complete. Fine. जो आपका sequence and series वाला unit है वो complete हो गया है. Now we'll start with your second unit next time. Before that, I'll give you one more question to do. You please do this question just now. I'm writing this question. Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you write down this question. 1 minus 2 by 3 plus 3 by square minus 4 by 3 cube plus 5 by 3 raised to power 4 and so on. मैम ये थर्ड टर्म 3/12 लिखा है. Third term is 3 raised to power 2. Discuss the convergence of this series. How will be your UN? Ma'am, n upon 3 raised to the power Upon n. 3 raised to power n. N upon 3 raised to power n or n minus 1? n plus n minus n 1. minus 1. n minus 1. N minus 1. करिए इसको. Is it absolutely convergent? Excuse me, ma'am, I have a question. हाँ जी बेटा बोलिए. बुक में ना मुझे गॉस टेस्ट दिख रहा था. Is it not in the syllabus? Yes, it is not there in the syllabus. Gauss's test is not there in the syllabus. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, it is divergent. Yes, it is divergent. First check the absolute convergence. Divergent. It is convergent, sorry. Absolute convergence क्या आ रही है इसकी? Absolute convergence क्या आ रही है इसकी? कौन सा टेस्ट लगाया बेटा? Ma'am, first I applied Leibniz test and I'm not getting limit n tending to infinity as 0. बेटा मैंने वही कहा ना, पहले आप इसका आप It is absolutely convergent. It is absolutely convergent. अगर ये absolutely convergent है तो ये convergent होगी या नहीं होगी ये series? Ma'am, it should be convergent according to the result. Yes. So it should be convergent.
अगर ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है सीरीज, तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। हम हो सकता है यहाँ पे ठीक से इस पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं, राइट? सो दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इफ अ सीरीज इज, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ना, if this series is absolutely convergent, this term is obviously less than equal to 2 by 3, this term is obviously less than 3 by 3 square, this term is obviously less than 4 by 3 cube, and so on. हाँ जी उत्सव कुमार। मैम मैंने इसमें रेशियो टेस्ट लगाया तो UN/UN+1 की वैल्यू मेरी 3 आ रही थी। एक सेकेंड, आपने रेशियो टेस्ट में UN में UN+1 करते हैं, UN+1/UN करते हैं? UN+1/UN। राइट, UN+1 में UN। मैम फिर मैम UN+1/UN की वैल्यू 1/3 आएगी। तो मैम अब इससे मैं वो रिजल्ट भूल गया कि मैम उसमें कैसे डिसाइड करते थे। वो आप अपने नोट्स देखेंगे, मैंने आपको लिखवाया हुआ है ये। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। Less than 1 is convergent. Right. Less than 1 is convergent, greater than 1 is divergent, and k equal to 1 is equal to false. Sorry, k equal to 1 is the test fails. Right. So 1 by 3 है, so 1 by 3 is less than 1, so the series is convergent. So Yes, the ma'am, absolute convergence is there. So if a series is absolutely convergent, then it is also convergent, because all the terms are less than equal to all the terms of this series. 1 is less than equal to 1, 2 is less than equal to 2 by 3, 3 by 3 square is less than equal to 3 by 3 square, 4 by 3 cube is less than equal to 4 by 3 cube, and so on. So these terms are less than equal to all the all the terms here are less than equal to this, so you can say that it is absolutely convergent. ठीक है? Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any doubt in this? No, ma'am. Okay. So this particular unit is complete. एक सेकेंड आप रुक जाइए। Have you all seen the syllabus of Maths 101? Have you all seen the syllabus of Maths 101? Yes, ma'am. So according to that, we have seen all these tests: comparison test, ratio test, root test, integral test, Rabe's test, and the logarithmic test. And we have done what is alternating series, absolute convergence, and the conditional convergence. Next, we are going to start with the differential calculus and the integral calculus in single variable, which you have done. We are going to do the advanced part of integral and the differential calculus. Is that fine? In this particular unit, we are going to cover only. Is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In this particular unit, we are not going to cover the parametric and the polar coordinates. We are going to cover only the Cartesian coordinates. ठीक है? चाहे वो किसी भी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हो, एरिया, आर्क लेंथ, सरफेस, वॉल्यूम, किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में हो, we are going to cover only the Cartesian coordinates. We are not going to do parametric and polar coordinates. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. So you can leave the class.
मैम नेक्स्ट टेस्ट या असाइनमेंट हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Assignment you can expect by the end of this week. मैम सरप्राइज टेस्ट असाइनमेंट से पहले नहीं होगा ना? Sorry? सरप्राइज टेस्ट असाइनमेंट से पहले नहीं होगा ना? ऐसा कोई श्योर नहीं है, बट हाँ, I would prefer taking the first surprise test after your C. आपके पूरे सिलेबस में आपको ये पता होगा. I'm just informing you once again. आपके पास यहाँ पर जो मैथ्स का MA 101 है, ये 100 मार्क्स का है, right? This you are aware of, and Yes, this ma'am. is divided Yes, as ma'am. Yes. 50 marks, 25 marks, and 25 marks. This is how it is divided, right? 50 marks is for your ETE, that is end term examination. 25 is for your CWS, and 25 marks is for your MTE. Is that fine? This I will let you know how I will evaluate this. This I have no idea as of now. Okay? Yes, ma'am. For ETE, it will be, there will be 2 surprise tests and 3 class monthly tests. And 3 class monthly tests. Out of these 2 surprise tests, I will consider 1 surprise test, 1 best surprise test, and 2 class monthly tests. 2 best class monthly tests will be considered. Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the class assessment, this is your CWS classwork assessment. I will take 6 assignments. ठीक है, I will take 6 assignment and 3 tests. ठीक है, 6 assignments will be of 12 marks and 3 tests will be of 12 marks. 1 mark will be of your class performance. Is that fine? Okay. Yes, ma'am. If you want, Yes, you ma'am. can take a screenshot of this so that you need not ask me again. मैम ये क्लास वर्क असेसमेंट में भी कुछ बेस्ट ऑफ 3 या फिर 2 कंसिडर किया जाएगा या फिर ये सारे नहीं, सारे. ठीक है मैम. ये एक्चुअली ETE is DTU की गाइडलाइंस. CWS के लिए there are no guidelines. A teacher can do as she wishes. Okay? ये मैम, ये टीचर की असाइनमेंट्स मर्जी के है. लिए कितना टाइम दिया जाएगा? 1 week. ओके मैम, थैंक यू. मैम एक बार आपकी तो कोई दूसरी क्लास नहीं है अभी आपकी दूसरी क्लास नहीं है? नो मैम, अभी नो मैम. Okay, so on Thursday, on Wednesday, you don't have any class after my class, right? Because last time you said, ma'am, we have a class after this. मैम हमें मेल आई थी लास्ट वीक किसी और क्लास की, वो मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, इसलिए हमने आपको तब ऐसा बोला था, तो वो अब क्लियर है वो. ठीक है, तो मतलब आपका Wednesday को after my class you don't have any other class. Yes, you can ask questions. We have a class, but it is scheduled at 3 o'clock. That is fine. But immediately after 1 o'clock you don't have any class. यस मैम. हाँ. मैम वो एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम वो अटेंडेंस कॉल के वक्त मेरी नेटवर्क इशू हो गया था, तो वो लीव हो गया था, तो आप एक बार चेक कर लोगे? 63 है मेरा रोल नंबर. ठीक है, मैं चेक कर लूंगी. ओके, थैंक यू मैम. Okay, I'm leaving the class now. ओके मैम, थैंक यू. Okay. मैम. हाँ जी. मेरी भी अटेंडेंस में आप चेक कर लीजिए, रोल नंबर 55. बेटा मैंने नाम अनाउंस कर दिए थे ना जो एब्सेंट थे.
मैम आफ्टर 35 में आपने अनाउंस नहीं किया था शायद। क्या रोल नंबर है तुम्हारा? 55। मैंने भी वही कर रखा है यार, बहुत लोग के करते हैं गाना बज रहा है। अब 63 भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है। उस कार्ड में दो बंदे